Hello friends, welcome to Smart Shiksha. Today we are going to discuss about ओडिशा जीके जो कि आने वाले OSSC ग्रुप सी एग्जाम के लिए फ्रूटफुल रहेगा. So let's start the topic. Who founded the Satyavadi school with nationalist spirit in Odisha? Who founded the Satyavadi school with nationalist spirit in Odisha? Answer is option number 3, Gopabandhu Das. Gopabandhu Das founded Satyavadi school in Odisha 1909 को एस्टैब्लिश हुआ था सत्यवादी स्कूल. ही ऑल्सो फाउंडर ऑफ समाज न्यूज़पेपर. समाज न्यूज़पेपर. गोपबंधु दास ऑल्सो फाउंडर ऑफ समाज न्यूज़पेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन व्हिच बैटल वाज मुकुंददेव डिफीटेड? इन व्हिच बैटल वाज मुकुंददेव डिफीटेड? Answer is option number 1, Gohiri Tikri. Option number 1, Gohiri Tikri is the river bank of Baitarani. Bank of Baitarani. Bhadrak. Bank of Baitarani, Bhadrak. Gohiri Tikri. Mukundadev was defeated. Next question. Who among the following was associated with Paiko rebellion? Who among the following was associated with Paiko rebellion? Answer is option number 2, बक्सी जगबंधु. पाइको रिवॉल्यूशन बक्सी जगबंधु 1817 को पाइको रिवॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस in Odisha will you find a cave architecture of prehistoric time? In which of the following places in Odisha will you find the cave architecture of the prehistoric time? Prehistoric time का architecture. Answer is Shishupalgarh. Answer is Shishupalgarh. Shishupalgarh temple city. Next question. Which of the following statement is correct regarding Paika? Which of the following statement is correct regarding Paika? It is a marital folk dance performed in the southern part of Odisha. ये हो सकता है. It is a marital folk dance performed in southern part of Odisha. It is a popular harvest dance performed by the tribal people of Odisha. Harvest dance. Option 3. It is a popular sport performed by the tribal people of Odisha. Popular sport. Option number 4. None of the above. Most appropriate answer is option number 1. It is a marital folk dance performed by the southern part of Odisha. Paika. It is a marital folk dance performed the southern part of Odisha. Most appropriate regarding to Paika. Next question. In which of the following edicts does Ashoka use the terms Priyadarshi king of Magadha? In which of the following edicts does Ashoka use the term Priyadarshi king of Magadha? Priyadarshi king of Magadha. Answer is option number 4, Bhabru Rock Edict. Bhabru Rock Edict. Bhabru Rock Edict. Next. Which of the following is not correct with reference to Sun Temple, Odisha? Sun Temple, Konark, Odisha. Which of the following is not correct? The temple was declared a UNESCO World Heritage Site in 1984. ये ठीक है. World Heritage Site के अंदर टेम्पल डिक्लेयर हुआ था 1984 को. इट वॉज बिल्ट इन ओडिशा स्टाइल आर्किटेक्चर और कलिंग आर्किटेक्चर. ओडिशा का जो भी मंदिर है वो कलिंग आर्किटेक्चर में निर्मित हुआ है. थर्ड. इट वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिंहदेव II ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी. किंग नरसिंहदेव I. किंग नरसिंहदेव I बिल्ट कोणार्क टेम्पल. इसमें 2 लिखा है तो ये गलत हो गया. द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च्ड ए स्कीम इन 2020 फॉर 100% सोलराइजेशन फॉर द टेम्पल.
ये भी सही है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 ये गलत हो जाएगा, इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सन टेम्पल कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डायनास्टीज दैट रूल्ड कलिंगा their prominent kings is correctly matched? Which of the following pairs of dynasties that ruled Kalinga their prominent kings is correctly matched? Answer is option number 2 Chedi dynasty Kharavela, Chedi dynasty Kharavela, Chedi dynasty Mahameghavahana, Chedi dynasty is also known as Mahameghavahana dynasty, Mahameghavahana dynasty. Next question, in the Sarnath inscription Emperor Ashoka's name appear as, in Sarnath inscription Emperor Ashoka's name appear as, Ashoka is otherwise known as Dharmashoka, सारनाथ इंस्क्रिप्शन में लिखा है धर्माशोक आफ्टर कलिंग वार, कलिंग वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिरोजा टेम्पल, राजारानी टेम्पल एंड द समलेश्वरी टेम्पल आर लोकेटेड इन, द बिरोजा टेम्पल, द राजारानी टेम्पल एंड द समलेश्वरी टेम्पल आर लोकेटेड इन, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा। ये जो तीनों टेम्पल है वो ओडिशा के अंदर है। कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर, कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए फीचर ऑफ ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए फीचर ऑफ ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? Option 1, exterior walls were lavishly decorated with intricate carvings. Option number 2, ground plan of main temple was square. Option number 3, boundary walls around the temple enclosure were absent. Option number 4, roofs were vertical with sharp inward curves. Roof were vertical with sharp inward curves. Answer is option number 3 is the right answer. Option number 3 is the right answer. Boundary walls are present in Odisha style architecture. पूरी में ही देख लो, कोणार्क में ही देख लो, बाउंड्री वॉल्स टेम्पल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टचित्र स्टाइल, पट्टचित्र स्टाइल of a painting is one of the oldest and most popular art from which of the following state? पट्टचित्र स्टाइल, आंसर इज ओडिशा। पट्टचित्र स्टाइल पेंटिंग है ओडिशा, पट्टचित्र स्टाइल पेंटिंग ओडिशा। बिहार का मधुबाणी, मधुबाणी बिहार। राजस्थान का मानधना, मानधना, मानधना। आंध्र प्रदेश का कलमकरी, कलमकरी आर्किटेक्चर स्टाइल। आंध्र प्रदेश का कलमकारी, राजस्थान का मानधना, बिहार का मधुबाणी पेंटिंग स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड उत्कल ब्राह्मण समाज इन ओडिशा? हु फाउंडेड उत्कल ब्राह्मण समाज इन ओडिशा? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 हरनाथ भट्टाचार्य। हरनाथ भट्टाचार्य फाउंडेड उत्कल ब्राह्मण समाज इन ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर did the Paika revelation takes place? In which year did the Paika revelation takes place? मैंने इसको पहले से बता चुका हूं इस वीडियो में। आंसर इज 1817 को पाइका रिवेलेशन, बक्सी जगबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर व्हिच इवेंट did the British acquire the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha? After which event did the British acquire the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha? Answer is option number 2 Battle of Buxar।
बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स अक्वायर दीवानी, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। बैटल ऑफ बक्सर फॉट बिटवीन मीर क्वासिम वर्सेस ईस्ट इंडियन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर क्वासिम वर्सेस फॉट बिटवीन मीर क्वासिम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज नॉट लोकेटेड इन ओडिशा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज नॉट लोकेटेड इन ओडिशा? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। नागजीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज नॉट लोकेटेड इन ओडिशा। बर्मा संबलपुर में है, भितरकनिका केंद्रापड़ा में है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किस डिस्ट्रिक्ट में है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवमाली पीक इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा? देवमाली पीक इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा? आंसर इज देवमाली, कोरापुट। देवमाली पीक इज लोकेटेड इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is a predominant species of deciduous forest of Odisha? Which of the following is a predominant species of the deciduous forest of Odisha? Answer is option number C, sal. Sal species is the most predominant species of deciduous forest. Next question, Similipal Biosphere Reserve was declared a biosphere reserve by the government of India in which of the following year? Similipal Biosphere Reserve was declared a biosphere reserve by the government of India in 1994. Option number 3, 1994 को सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व नेशनलाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व में डिक्लेयर हुआ था by the government of India. Next question, which of the following is the largest district of Odisha area wise? Which of the following is the largest district of Odisha area wise? Answer is option number 3, Mayurbhanj is the largest district of Odisha area wise. Jagatsinghpur is the smallest district of Odisha, smallest area wise. Population wise Ganjam is the most populous, Ganjam most population. Devagad least population wise district, least population district Devagad. Next question, what is the literacy rate in the Indian state Odisha? What is the literacy rate of the Indian state Odisha? Answer is 72.9. According to the census 2011, 72.9 people of Odisha are literate. Next question, which of the following river originates from the Gonasika or Gupta Ganga hills Odisha? Which of the following river originates from the Gonasika or Gupta Ganga hills Odisha? Answer is Gupta Ganga, Baitarani river, Gonasika originate from Gonasika, Baitarani river. Next question, what is the sex ratio of Odisha? What is the sex ratio of Odisha? Answer is option number A. Option number 8, 979 female versus 1000 male according to the 2011 census. Next question, which type of forest has the maximum area in Odisha? Which type of forest has the maximum area in Odisha? Odisha का maximum area ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मैक्सिमम एरिया कवर करता है फॉरेस्ट लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेराइन सैंक्चुरी डज नॉट सपोर्ट द कोरल पॉपुलेशन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेराइन सैंक्चुरीज डज नॉट सपोर्ट द कोरल पॉपुलेशन? कोरल पॉपुलेशन, गहिरमथा मेराइन सैंक्चुरी डज नॉट सपोर्ट कोरल पॉपुलेशन।
Next question. On which river is the Rengali Dam constructed? On which river is the Rengali Dam constructed? Answer is option number 4, the Brahmani. English का भी प्रैक्टिस हो गया ग्रामर का. The Brahmani is the right answer. Rengali Dam constructed. Next question. Which among the following states does not share its border with Odisha? Which among the following states does not share its border with Odisha? Answer is option number 3. Bihar does not share its border with Odisha. Next question. Which crop does grow better in the sandy soil of Odisha coast? Which crop does grow better in sandy soil of Odisha coast? Answer is option number 4, turmeric. Turmeric grow well in sandy soil. Next question. In the production of which mineral does Odisha occupy the first position in India? In the production of which mineral does Odisha occupy the first position in India? Answer is chromite, 96%. Next question. Kalahandi district in Odisha is famous for which crop? Kalahandi district in Odisha is famous for which crop? Answer is option number 3, rice. Option number 3, rice. Kalahandi is famous for rice. वीडियो अच्छा लगा तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.